Hello guys, welcome to Tech Job Career. Today update is from the Accenture. Accenture is hiring for packaged app development associate. Experience is 0 to 1 year, 11 month. Salary range is not defined, but your package will be 6 to 7. Job type is full time. Location is multiple: Bangalore, Hyderabad, Pune, Mumbai, Chennai, Gurgaon, Kolkata, Indore, Jaipur, Coimbatore, Ahmedabad, Bhubaneswar. Last date is not mentioned. Description. This is a detail about the company. As an associate software engineer, you would be largely be involved in designing, building, test and assemble, support and configure application using business requirement. Understand the business drivers that will impact performance and deliver software to those expectations. Big technologies trend into solutions, participate in the development of automation solutions, new functionality and technologies and integrate them in existing solutions. Responsible for incident resolution and support, extend to customer through voice interaction, email, chat, remote support. What they need: ability to anticipate and resolve business issues with agility, multidisciplinary and versatile with the aptitude to learn and apply new skills faster, good analytical and problem solving skills, proficient verbal and communication skills, deliver code to time, quality expectations, and participate in peer reviews, take ownership of successful implementation of the solutions, support infrastructure operations or manage deliver for IT production system and services, flexibility to reallocate for project deployment to any part of India, work 24/7 shift basis business requirement, basic understanding of ABAP development on HANA, CDS, AMDP, performance analysis, experience or knowledge in configuration, customization of Salesforce.com applications, good working knowledge of J2EE or full stack development, knowledge and development experiences .NET, ASP.NET, MVC. Eligibility criteria. Minimum criteria in any engineering stream of BE, BTech, ME, MTech or MCA or MSc, CSIT, computer application, data science, computer science and applications, any year pass out till 2024. No active backlog during application or during onboarding. Candidate should not have more than 23 months of full-time experience. Candidate should not have appeared for Accenture recruitment assessment interview process in the last 3 months. Candidate should not have completed the relevant degree eligible for this job role in the stipulated duration of the degree. Hence, there should be no gaps during the course of degree. Example, candidate must complete the 4-year BTech course in 4 years. Student must have Indian citizenship. Please note that the Bhutan, Nepal nationals can work in India without a need for obtaining a work visa. All other foreign nationals require work visa or an overseas citizenship of India. A person of Indian origin are to work in India. This is the description of the job and eligibility criteria. Next is process. फर्स्ट इन योर असेसमेंट प्रोसेस. अगर आप एलिजिबल होंगे तो आप ईमेल एक रिसीव करेंगे जिसमें ऑनलाइन असेसमेंट की लिंक होगी. असेसमेंट 2 स्टेजेस में होंगे और आपको वो शेड्यूल टाइम पे कंप्लीट करना होगा. आफ्टर दैट यू हैव अ चांस टू गिव अ मॉक असेसमेंट, जिससे आपको एक आइडिया बन जाए कि एक्चुअल इन्वायरमेंट में टेस्ट कैसे होगा. यू विल गेट 20 मिनट मॉक प्रैक्टिस असेसमेंट. 20 मिनट का मॉक प्रैक्टिस असेसमेंट होगा. मॉक असेसमेंट मैंडेटरी होगा. ये इंश्योर करेगा कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट सब कुछ सही है, और ये असेसमेंट आपको हेल्प भी करेगा कि एक्चुअल असेसमेंट में का एक्सपीरियंस कैसे हो सकता है. असेसमेंट 1 में कॉग्निटिव और टेक्निकल असेसमेंट होगा, जहाँ पर आपको 90 मिनट मिलेंगे. कॉग्निटिव और टेक्निकल असेसमेंट में 50 क्वेश्चंस होंगे. इंग्लिश एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग पर. टेक्निकल असेसमेंट इंक्लूड करेगा 40 क्वेश्चंस, कॉमन एप्लीकेशन एंड MS ऑफिस, सुडो कोड, फंडामेंटल ऑफ नेटवर्किंग, सिक्योरिटी एंड क्लाउड. कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट का रिजल्ट 5 से 10 मिनट बाद आ जाएगा जैसे ही आप टेस्ट सबमिट करेंगे, और कोडिंग असेसमेंट उसके बाद रिजल्ट के बाद तुरंत स्टार्ट हो जाएगा. आपको सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना पड़ेगा फर्दर राउंड्स के लिए. अगर आप कॉग्निटिव और टेक्निकल असेसमेंट में पास नहीं होते या अटेंड नहीं करते हैं तो आप वहीं टर्मिनेट हो जाएंगे. असेसमेंट 2, कॉग्निटिव कोडिंग असेसमेंट. द ड्यूरेशन ऑफ द असेसमेंट विल बी 45 मिनट. आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे. आप किसी भी लैंग्वेज को यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं, लाइक C++, .NET, जावा, पाइथन. तीसरा असेसमेंट होगा कम्युनिकेशन असेसमेंट. द ड्यूरेशन ऑफ असेसमेंट इज अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स. यू विल रिसीव अ सेपरेट ईमेल विद टाइमलाइन and login detail to participate in this assessment. Communication assessment will assess you on the below mentioned parameters: sentence mastery, vocabulary, fluency and pronunciation. After that you will get the interview link. After the interview you will get the selection mail. This is a detail about the job, like description, eligibility and process. Apply link is given in the description. If you are facing any problem in applying, please comment. I will help you on that. Thank you.